Welcome back. So next we are going to study about the next type of market. Till now we have studied perfect competition, we have studied monopoly. Now we move to the second last type, which is oligopoly. मोनो का मतलब सिंगल था, पोली का मतलब सेलर था. अब हम पढ़ रहे हैं ओलिगोपोली. ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, पोली का मतलब तो सेलर ही है. So this market is an example of few sellers in the market. So if I talk about the SIM card industry, students, you all can relate it. तीन ही ऑप्शन है हमारे पास, VI, एयरटेल, जियो. तीन ही है, फ्यू गिने चुने सेलर्स है. Automobile industry, airline industry, they all are an example of oligopoly market. So oligopoly is that market where we have few firms, of course, with either a differentiated or a homogeneous product. Come on, the first feature, few firms or few sellers, as we discussed, they have some sort of monopoly, they have some sort of discrimination, they have some sort of complete control. आज देखिए ना, 3 सिम कार्ड है. पहले जियो ने फ्री में बांटा, आदत लगवाए, तब टॉप अप प्राइसेस कम थे. मार्केट में आने के बाद, तीनों ने कार्टेल फॉर्म करने के बाद टॉप अप के प्राइस बढ़ते गए. हमारे पास चौथा ऑप्शन है क्या? आज तीनों ने बढ़ा दिया, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा. म्यूचुअली फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट, कार्टेल. सो देयर आर फ्यू फर्म्स, इवन दे कैन हैव दैट मोनोपोली पावर. डेंजरस है इकोनॉमी के लिए, right? Then we have the second point, which is interdependency. Of course, they all are interdependent with each other. So here you can see Jio launched in India with very cheap data plans. In fact, zero, in fact, free and then cheap. And then Airtel and Vodafone also had to reduce their prices immediately. But once that was completed, today you check, all three have increased their prices. Band तो हमारी बच गई इसमें, right? Lack of uniformity, there is not a definition or a precise thing that ये size, ये form इतना ही होना चाहिए. Some may be big firms, some may be small firms, so there is lack of uniformity in oligopoly market. There are entry barriers, of course ये भी एक ऐसा market है, huge investment required, कोई भी easily ये market में भी आ सकता नहीं है. जब competition है तो आ गया, लेकिन अगर monopoly है या oligopoly है, then barriers हमेशा से रहेंगे. देन एडवर्टीजमेंट, इवन इफ सबको पता है सिम कार्ड तीन ही है, एयरलाइन में ये इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सभी ऑप्शन है, लेकिन फिर भी दे इनकर ऑन द एडवर्टीजमेंट so that they can reach one day to that monopoly power. They reach one that they have the maximum database with them. Then we have uncertainty, कभी भी कोई भी साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और दूसरे कंपनी की बजा सकते हैं. टाटा, एयर इंडिया, यू माइट बी नोइंग, था, फिर गया, फिर वापस आया. VI, वोडाफोन, आइडिया, अब साथ में. So there's a lot of uncertainty in the market. They can come together, they can evaporate in the market. So all it depends upon the market power. So that this is market is a oligopoly type of market. चलो, now moving ahead with the last part, which is a monopolistic competitive market. ये बहुत ही important market है students, और ये बहुत ही important question भी है. सबसे मेजॉरिटी प्रोडक्ट जो हम हमारे आजू बाजू दिख रहे हैं वो इसी मार्केट के, बिकॉज देयर इज हेल लॉट ऑफ कंपटीशन. चाहे आप टी शर्ट बोलो, क्लोथिंग बोलो, चश्मा बोलो, घड़ी बोलो, एसी बोलो, कैमरा बोलो या फोन बोलो, हेल लॉट ऑफ कंपटीशन गोइंग ऑन इन द मार्केट, राइट? So monopolistic competitive market, if we talk about, it is defined by E.H. Chamberlain again. It's that type of market where there are a large number of buyers, where there are a large number of sellers. Of course, they are selling a differentiated product, and of course, there's a close substitute as well available. बिकॉज ये मार्केट का नाम ही है कंपटीशन, तो ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट तो रह गई. सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हियर द सेलर इज ऑफ कोर्स अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ मेकर, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है. देश में जितने लोग हैं, ऑफ कोर्स बायर्स तो उतने रहने ही वाले हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मार्केट, विच इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. बहुत ही कॉम्पिटिशन है. हमें हमारा प्रोडक्ट बाकी कॉम्पिटिटर से कैसे बनाना है अलग. How are we going to make our product different from the other competitive products? That is product differentiation. हनुमान की गदा चॉकलेट है एयरपोर्ट पे, 1400 रुपए की 10 चॉकलेट है अंदर. क्यों बिकती है? क्योंकि उसका पैकेजिंग एक नंबर है, और एयरपोर्ट पे है तो बिकना ही है. लोग खरीदने वाले हैं, औकात वाले लोग ही जाते हैं, तो खरीदने ही वाले हैं. After sale service, packaging, quality, pricing, it can be any factor that can make you differentiated from the other competitor in the market. हमारे पास रिविजन बुक है, हमारे पास हमारा स्टडी मटेरियल है. इस स्टडी मटेरियल में सिर्फ बोर्ड बुक के सम्स नहीं है, एडिशनल सम्स भी है. वी हैव दैट यूएसपी. हमारी बैच साइज रीजनेबल साइज है.
हमारे पास मॉडरेटर्स आते हैं चेकिंग के लिए, हमारे पास मॉडरेटर्स आते हैं सेशन के लिए बोर्ड एग्जाम के पहले. व्हाट इज ऑल दैट? दैट्स हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, other coaching classes in the market, and that is an example of product differentiation. There is a lot of competition going on in the market, but we are different. We are different. That is determined by the features that we provide. Few of the features which I told you, and that's a product differentiation market. Most important feature students, because इतना competition है कि आपको आपके product को stand लेने के लिए market में कुछ तो अलग देना पड़ेगा. It can be anything that you are giving, right? चलो, देन देर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. स्टूडेंट्स, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है मार्केट में. अगेन कंपटीशन वर्ड है. फ्री एंट्री, आ जाओ, बंद करना है चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन देर इज सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर विच इज सेलिंग कॉस्ट. एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लैंड का रेंट दिया, लेबर को वेजेस दिया, ये सब तो कॉस्ट देना ही है. बट वो कॉस्ट के अलावा सम एडिशनल कॉस्ट जब इनकर होते हैं, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल्स, एग्जीबिशंस, ये सब जब एडिशनल जाते हैं तो उसे कहा जाता है सेलिंग कॉस्ट. क्या कहा जाता है? सेलिंग कॉस्ट. एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट. तो एडवर्टीजमेंट बोलो या फ्री सैंपल्स बांटना बोलो, सब कुछ सेलिंग कॉस्ट है. देन वी हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट. ऑफकोर्स डेफिनेशन में ही दिया है, ये मार्केट कॉम्पिटेटिव मार्केट है, तो ऑफकोर्स इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे. But it all depends upon how are you different from the market, and therefore the consumers and then going to choose you. There is concept of group. All the products which are similar, Patanjali ka sabun, Lux ka sabun, Dettol ka sabun, they all are firms. They all come together. They form a group. They form a soap industry. That's a concept of group where all similar companies will come together. Similar products will come together, and that your Chamberlain, who gave this concept of monopolistic competition, he gave this concept of group. Is this clear, students? So that's all about the features of monopolistic competitive market, and that's how we complete chapter number 5, which is a very easy chapter where you studied features of perfect competition, features of monopoly, types of monopoly, features of oligopoly, features of monopolistic competitive market, and one important question, equilibrium wala answer, scissor wala. All the best, guys. Thank you.